Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6th, subject General Science, lesson number 7, Getting to know plants. बच्चों पचमिन वीडियो में वुच प्लांट इन डिफरेंट टाइप्स मसन हर्ब्स, shrubs and trees. बे पर्याव क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आज पर्न प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स मसल रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स इथे कन बाकी पार्ट्स सीड्स यथ मज पर्न स्ट्रक्चर एंड फंक्शनस आज परो फिलहाल 7.2 एक्टिविटी 7.2 दैट इज स्टेम फंक्शनस क्या स्टेम activity second, we should require a glass, water, red ink, a herb and a blade for this activity. Ashpara is root absorb karan water and minerals from the soil. Roots kara absorb water and minerals from the soil. I'm pat karan forward. Ish karan leaves and kun. Her kun karan forward. Paknavan. मगर कम मज पकना स्टेम मज यानी कि रूट्स कर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल पे वाटर तो मिनरल्स हर खालन लीव्सन तान मगर पक कपर यह पक स्टेम मज गो स्टेम मज चैनल्स पाइप्स यमो मज मटीरियल्स हर खसान टुवर्ड्स लीव्सन तान या लीव्सन हज पत फूड करो सिंथेसाइज बनाउन गजा बनाउन प्लांट खतर सह कुत वातान पत अमन रूट्सन तान अमे स्टेम मज गो मंजस तेल वो स्टेम अमच फंक्शनस मसलन इट फॉर्म द लिंक बिटवीन द रूट्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इट प्रोवाइड्स द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स absorbed by roots to different parts of the plant और बे क्या करान it bears leaves in such a way that they get maximum sunlight and support them वो मुख्तलिफ फंक्शनस स्टेम वह पे एक्टिविटी करें यम फंक्शनस स्टेम अम खुद क्या जरूरत करा यह ऑब्जर्व गोडनेथ अम खुद वी रिक्वायर a glass, water, red ink, a herb and a blade for this activity. Pour water to fill 1/3 of the glass. अगर वो स्कूल मज बीकर शीशु गिलास तथ मज क्या गो जरूरत अम पे आब जरूरत अम पे रेड इंक अम पे प्लांट जरूरत लकुट प्लांट हर्बेशियस हर्ब एंड अ ब्लेड कटिंग करान चटान ब्लेड जरूरत पे करो पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द गिलास गोडनेथ करो स्टार्ट तुलो आब त्रो गिलास मज कोता 1/3 एड a few drops of red ink into the water अम पे त्रो अत मज कलर रेड इंक अम आबू कलर गे रेड cut the base of the stem of the herb अम पे स्टेम हर्ब प्लांट अमुक स्टेम अत करो बन कन कट यानी कि रूट्स नो चटित अत करो तेल स्टेम योत स्टेम बेस बन कन of the herb and put in the glass as shown in figure 7.5 पतलो पत्राव इथे कन गिलास मज वुचान अम पे ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे पत दोम दुह क्या do any of the parts of the herb appear to have red color सात आबस मज त्रो अत मे रेड इंक जरूरी यह गि एब्जॉर्ब यह खस हर एज अ रिजल्ट अमुक कलर तन रेड इफ yes how do you think the color reached there you can cut the stem across and look for the red color inside the stem गो वो बन गई आबस मज त्रो अतन गई एब्जॉर्ब वाटर मज इंक एज अ रिजल्ट ये एब्जॉर्ब गई खुद हर वो तेल स्टेम यह गो रेड तिकाज अमे मज वाटर यह कलर्ड वाटर यह रेड वाटर पोकमुत एज अ रिजल्ट कि अम प्लांट्स कह पार्ट्सन हुंद कलर तक गो रेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम अम सो क्लियर कि वाटर पकान हर फ्रॉम द स्टेम टुवर्ड्स
the upper parts of the plants. So it is clear here. From this activity, we see that water moves up the stem. In other words, stem conducts water. Just like the radiing minerals dissolved in water also move up in the stem. It can वुचान रूट्स मज एब्जॉर्ब वाटर तो मिनरल्स पे तम हेर खसान इथे कन वुच अत वाटर तो बे इंक तम तक अत डिजॉल्व तो पे खत अम हेर स्टेम मज and water also move up in the stem along with the water. The water and minerals go to leaves and other parts attached to the stem through narrow tubes inside them, inside the stem. I'm part of water stem and water. I'm part stem stem connected asan ch. Masan leaves asan, flowers asan, branches asan, different parts asan plants. Taman such connection stem up. Stem means gasi sarnian kon forward. Leaves kon gasi, branches kon gasi, flowers kon gasi. Kus you see water the minerals bon roots to pat heur khasan ch. Ko telwana wo stem is come conduction of materials from roots to the leaves, upper parts of the plant, and also the food which is synthesized in the leaves, switch pagam patakokon towards other parts where food is not synthesized. Leaves and his come chasan gazak banaun. Sukotil tomo lizo bano gaza ki part plant thomas in the gazash pan hekam bana ki toman show gazi zurura got switch pagam pas sitami lizo pat ban food switch forward tum kapar pagan am khad channel asan gaza paknan khad channel asan ta chana fluvium ithe kan paknan khad bya channel asan plants man stem mins pakana ta chana xylem go xylem mins as pakan water the fluvium mins as pakan tele food xylem is kam as roots pat leaves on tane bon pat hor khalin material go ta as upward direction am pach byags fluvium am is kam as ya donu yando upward te downward te pagna materials am afno kam as pagna pakan afno tasan pakan gza food materials organic materials organic substances go teli which I see stem asan chi conduction of materials karan am pat activity. This activity could be done with herbs having white flowers. Put one branch with a white flower in the water in glass A and add a few drops of red ink into the water. This activity is this activity could be done with herbs having white flowers. This activity is herbaceous plants is herb magar having white flowers. The flower asan petals white. Put one branch with a white flower in the water. Ak branch ak chataus ak plantas yes flower aise ak plant chataus ak branch yes white flower aise so karo is deep israus katman glass man in the glass and add few drops of the red ink atma israus same it put red ink ink to the water. Do a funny thing with another branch split it halfway along its length and put the two ends in the water in glass B and C. तो चेम सा ये नसा चेम आख बराबर आख ब्रांच कट करित पत त्रो गिलास मंज गिलास त्रित त्रो अस अत वाटर ते बे अत रेड इंक ते अम पत ब्याख अत करो अस तो गिलास सी अत फ्लावर कहीं यह कट करित अतन वो गिलास बी अत मज हाफ स्टेम हाफ ब्रांच कट करित है. But guess what would happen to the flower in glass A and the flower put jointly in B and C when you had cut across the stem? In activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem? So it is doim. That is the functions of stem. But tell you see stem asan chi conduct karam water and minerals from roots to the upper parts of the plant. Inshallah next videos par always leaf.